मिक्स डिज़ाइन की किताब फॉर्मूला सबने रट लिया, पर क्या आपने कभी सोचा है कि लैब में निकला डिज़ाइन साइट पर हमेशा फेल क्यों हो जाता है? सिर्फ कैलकुलेशन करना काफ़ी नहीं है मेरे दोस्त, साइट पर चाहिए कंफर्मेशन, और वो कंफर्मेशन हमें देता है ट्रायल मिक्स। मैं 20 साल से देख रहा हूँ, इंजीनियर सोचते हैं कि IS 100-262 से एक बार वाटर सीमेंट रेशियो निकाल लिया, बस हो गया काम। लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो तो हमने अंदाजे से चुना था, उसे कंफर्म करना ज़रूरी है। और यहीं पर आता है ट्रायल मिक्स नंबर 1, 2, 3 और 4 का असली खेल। आज मैं आपको वो सीक्रेट 4 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जो IS कोड इस्तेमाल करता है, ताकि हम सिर्फ वर्केबिलिटी एडजस्ट ना करें, बल्कि हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो का परफेक्ट तालमेल बिठा सके। हम समझेंगे कि ट्रायल मिक्स नंबर 2 के बाद नंबर 3 और 4 में 10% वेरिएशन करना क्यों ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से ट्रायल मिक्स की रिपोर्ट में कौन कौन सी बारीकियां होनी चाहिए, ताकि कल को कॉन्ट्रैक्टर या RMC प्लांट आपको बेवकूफ़ ना बना सके? और क्यों फील्ड ट्रायल्स को हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन मेथड से ही करना चाहिए? यह वीडियो आपके मिक्स डिज़ाइन के डर को ख़त्म कर देगा। तो चलिए सीखते हैं कि ट्रायल बैचेस को प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है और फाइनल मिक्स रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। 6.2.9 Trial Mixes. The calculated mix proportions shall be checked by means of trial batches. जो calculated mix proportions हैं, उनको trial batches के through check किया जाएगा। Workability of the trial mix number 1 shall be measured. Trial mix number 1 की workability को measure किया जाएगा। The mix shall be carefully observed for freedom from segregation and bleeding and its finishing properties. Mix को ध्यान से observe किया जाएगा कि उसमें segregation, bleeding ना हो और उसकी finishing properties सही हों. If the measured workability of trial mix number 1 is different from the stipulated value, the water and/or admixture content shall be adjusted suitably. अगर trial mix number 1 की measured workability stipulated value से different होती है, तो water और या admixture की quantity को suitably adjust किया जाएगा. With this adjustment, the mix proportion shall be recalculated, keeping the free water cement ratio at the pre-selected value, which will comprise trial mix number 2. इस adjustment के बाद free water cement ratio को pre-selected value पर रखते हुए mix proportion को दोबारा calculate किया जाएगा, और ये trial mix number 2 होगा. In addition, 2 more trial mixes, number 3 and 4, shall be made with the water content same as trial mix number 2, and varying the free water cement/cementitious materials ratio by ±10% of the pre-selected value while satisfying the workability requirements as well. इसके अलावा 2 और mixes, trial mix number 3 और trial mix number 4, बनाए जाएंगे जिसमें वाटर कंटेंट सेम होगा जैसे ट्रायल मिक्स नंबर 2 में था, लेकिन फ्री वाटर सीमेंट/cementitious मटेरियल्स रेशियो को प्री सेलेक्टेड वैल्यू से ±10% बदल कर बनाया जाएगा। वर्कबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को भी सेटिस्फाई करना होगा। Mix number 2 to 4 normally provides sufficient information, including the relationship between compressive strength and water cementitious materials ratio, from which the mix proportions can be finalized. Generally, mix number 2 to 4 तक sufficient information मिल जाती है, especially compressive strength or water cementitious materials ratio के बीच का relationship, जिससे final mix proportions decide किए जा सकते हैं. Additional field trials are recommended particularly for workability requirements. Extra field trials भी recommend किए जाते हैं, खासकर workability को verify करने के लिए. The concrete for field trials shall be produced by methods of actual concrete production. Field trials के लिए concrete को वही methods use करके बनाया जाएगा जो actual concrete production में use होते हैं. 6.2.10 Reporting. The mixed design report shall include the following. Mixed design report में नीचे दिए गए points include होने चाहिए. Period of testing, starting and ending date, साथ. Details of work type of structure, if provided.
all the data provided for the mix design as per 4.1 and deviations from IS 456, if any. Relevant test data of different materials for the purpose of mix proportioning. Details of materials such as brand of cement, manufacturing date, week, year, percentage of pozzolano, slag, etc. as per manufacturer's certificate, source of coarse and fine aggregates if provided, etc. Materials key details, JSA brand of cement, manufacturing date, week, year, percentage of pozzolana, slag, manufacturer certificate, K according. Coarse or fine aggregates ka source, agar diaho, addi. Details of the trials conducted, recommended mix proportions. Table 9, recommended dosages of mineral admixtures materials for high-strength mixes, Clause 6.2.6. No. Mineral admixtures, recommended dosages, percentage by mass of total cementitious materials. Table entries. I. Fly ash, 15 to 30%. Second, ground granulated blast furnace slag, GGBFS, 25 to 50%. Third, metacholine, 5 to 15%. Fourth, silica fume, 5 to 10%. Table 10, volume of coarse aggregate per unit volume of total aggregate for different zones of fine aggregate. For water cement, water cementitious material ratio of 0.3, clause 6.2.7. Table 10, water cementitious material ratio equals 0.30 kali different zones of fine aggregate per coarse aggregate ka volume. Per unit, total aggregate ke hisab se, clause 6.2.7. Volume of coarse aggregate per unit volume of total aggregate for different zones of fine aggregate. Different zones of fine aggregate, kali total aggregate, ke per unit volume per coarse aggregate ka volume. Serial number, nominal maximum size of aggregate millimeters, zone 3, zone 2, zone 1, 10.0, zone 3, 0.56, zone 2, 0.54, zone 1, 0.52, 12.5, zone 3, 0.58, zone 2, 0.56, zone 1, 0.54, 20.0, zone 3, 0.68, zone 2, 0.66, zone 1, 0.64. Notes: volumes are based on aggregates in saturated surface dry condition. Note 1. Ye volume saturated surface dry SSD condition whale aggregates par based hain. These volumes are for crushed, angular, coarse aggregate, and suitable adjustments may be made for other shape of aggregate. Note 2. Ye values crushed, angular, coarse aggregate kalie hain. Agar aggregate ka shape alag ho, jesse rounded. To suitable adjustments gudane honge. Suitable adjustments may also be made for fine aggregate from other than natural sources. Normally, crushed sand or mixed sand having higher fine content, passing 150 micron sieve, which may need lesser fine aggregate content. In that case, the coarse aggregate volume may be suitably increased. Note 3. Agar fine aggregate natural source ka na ho, jesse crushed sand ya mixed sand, jisme higher fines 150 micron passing hote hai. To fine aggregate ki requirement kam ho sakti hai. Is case mein coarse aggregate volume ko suitably increase kiya ja sakta hai. 6.3. Illustrative examples. An illustrative example of concrete mix proportioning for high-strength concrete is given in Annex D. High-strength concrete get concrete mix proportioning ka ek illustrative example Annex D mein diya gaya hai. These examples are merely illustrative to explain the procedure, and the actual mix proportioning shall be based on trial batches with the given materials. Ye examples serve procedure ko samjhane ke liye hai. Actual mix proportioning hamesha trial batches are sidebar available materials ko use karke hi final kiya jayega.